So, good evening, YouTube. I'm again here with today's practice session. So, let's see who's going to join us today. So, waiting. By the way, we are going to talk about unless today. Good evening, Rohan sir, and good evening, Priya ma'am. Good evening, Rashmi ma'am. Good evening, Divyanshi ma'am. How are you all, people? Good evening, Simi ma'am. Priya ma'am, I'm good. Thank you. And how are you? I'm good, Simi ma'am. Thank you. And how are you? Good evening, Mohit sir. I'm good. Thank you. And how are you? Sounds good. Good evening, Yashi ma'am. So it's good. Well, I think eight people live, and so I just begin the topic because it's 10 o'clock. Today we are not going to talk about how was your day, and if you tell me, that's fine. Good evening, Sudhir sir. By the way, let's talk to the point. आज का जो point है आप सीधा सीधा let's do the business actually. And today's topic you must have seen, और वो है actually unless का use. Fine. And let me tell you, I'm absolutely good. Thank you. Hope you are good too. I'm absolutely good, ma'am. Thank you so much. Yeah. So let's begin. As I said, आज unless के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग, और unless पे जब आप बात कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट यू टू मेक सेंटेंसेस आपकी हेल्प करने के लिए या आपको प्रैक्टिस देने के लिए. हाफ ऑफ द सेंटेंस आई एम मेकिंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपको बनाना है एज you think actually. So here we go. I hope my mom is better than yesterday. Thank you so much for asking. Today I took her to military hospital, and some tests were done, and but her BP is quite fine. But again, tomorrow again I have to take her to some more tests. So let's see what happens. So thank you so much for asking. Hope your wishes will actually help her recover sooner. Anyways, so I was talking about unless. तो unless के बारे में बात करते हैं. So I'm making the first sentence, as I said, कि मैं आधा sentence आपको बना के दे रहा हूँ, और rest of the sentence आपको उसमें ऐड करना है जैसा आप सोचते हैं. आई होप आपको अनलेस याद होगा. जिन लोगों ने मेरी अनलेस का सेशन अटेंड किया हुआ है तो आपको सब पता होगा कि अनलेस मतलब एक ऐसी कंडीशन रखना जब कोई काम एक खास कंडीशन में आके नहीं होता है ना. हिंदी में आप उसे जब तक तब तक के तरह से बात करते हैं, हिंदी ना देखते हुए. अब सिर्फ इंग्लिश को देखिएगा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कह रहा हूं कि आई वॉन्ट forgive you, clear, unless. अब यहाँ के आगे का जो सेंटेंस है वो आपको कंप्लीट करना है. एंड आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू पीपल हु आर राइट नाउ प्रेजेंट, प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट कि आप अपने तरीके से इसको यूज करिएगा. आई होप अगर मैं इसका ट्रांसलेशन करके आपको समझाऊं तो आई वॉन्ट फॉरगिव यू, आई होप आपको पता है कि मैं विल नॉट की बात कर रहा हूँ, कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा जब तक कि, और वो आपको अब सेंटेंस ऐड करना है. अगर मान लो आप कभी इस सिचुएशन में हो जहां आपको एक कंडीशन बतानी हो, यानी कि आप सामने वाला व्यक्ति आपसे माफी मांग रहा है, या फिर आप उसे खुद ही बता रहे हैं कि आई विल नॉट फॉरगिव यू अनलेस. So unless you admit your mistake, that's very nice. Thank you so much, Simi ma'am. It's a very, very good sentence. So I won't forgive you unless you admit your mistake. Good, very nice sentence. I won't forgive you unless you apologize. Very nice, very good.
सो ज़्यादातर हम यही बोलते हैं कि जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे या जब तक आप माफ़ी नहीं माँगोगे, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और सिचुएशन आपको समझती है या समझ में आ रही है जहाँ पे आप बोल सकते हैं आई वोंट फॉरगिव यू अनलेस यू प्रॉमिस टू नॉट। इसमें आपको रश्मि मैम नॉट जो है वो पहले यूज़ करना टू से, देन योर सेंटेंस इज राइट दैट आई वोंट फॉरगिव यू अनलेस यू प्रॉमिस नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक, है ना? सो इट्स ब्यूटीफुल सेंटेंस, जस्ट आपको नॉट टू से पहले लगाना है, देन इट्स एब्सोल्युटली राइट। आई वोंट फॉरगिव यू अनलेस स्टॉप टेकिंग मी लाइक दिस। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है। एक तो अनलेस के बाद आपको जो डूअर है जिसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप यू लगाओगे, आई वोंट फॉरगिव यू अनलेस यू स्टॉप, और स्टॉप्ड नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म तो लग नहीं सकती है। तो अनलेस यू स्टॉप टेकिंग मी लाइक दिस, तो लाइक दिस का मतलब गेटिंग यू हियर, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे आप इस तरह से समझते रहे, ठीक है। सो आई वांट अनलेस यू स्टॉप टेकिंग मी फॉर, और उसके बाद आप उस सिचुएशन को बता सकते हो, सो इट विल बी बेटर। सो आई वांट फॉरगिव यू अनलेस so I won't forgive you unless you give me a treat. Yes, that's also very nice because the situation है, that is what we are working here, you know, कि रियल लाइफ सेंटेंसेस, हमारे रियल लाइफ के सेंटेंसेस से मैं बात करना चाह रहा हूँ, दैट आई डोंट वांट यू टू लाइक जैसे बहुत सारा होमवर्क जो है आई थिंक इन स्कूल इन कॉलेजेस आज जो हो रहा है वो गूगल करके हो रहा है। सो आई होप एंड मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ दैट गाइज यू डोंट गूगल इट, आप गूगल नहीं करते, आप सोचते हैं और आप बोलते हैं। सो दिस इज वेरी नाइस, देयर यू गो। मेरा जो दूसरा सेंटेंस है वो है he can't so there you go, I won't forgive you unless you make any mistake। नहीं 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 नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। जब तक आप दोबारा से गलती नहीं करोगे या फिर जब तक आप गलती नहीं करते मैं आपको माफ नहीं करूंगा, ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा, जब तक आप गलती नहीं करोगे मैं आपको माफ नहीं करूंगा, है ना? सुधीर से थोड़ा समझिए। सो ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस, सोचिए कि एक व्यक्ति उनके बारे में बात कर रहे हैं कि भैया वो जब तक अच्छी तरह नहीं सो सकते, कब तक वो सिचुएशन आपको बतानी है अनलेस करके। आई वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू टेक मी रोम अराउंड, नहीं इसमें टू लग जाएगा फिर, है ना कबीरा मैम? इसमें होगा कि आई वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू टेक मी टू रोम अराउंड, ठीक है? So you can use like this, or I won't forgive you unless you won't disrespect your elders। No, मोहित सर, द सेंटेंस अनलेस का सेशन आपने अच्छी तरह अटेंड किया था, और मैं आपको एक चीज़ ऐसा दिलवा देता हूँ कि जब हम अनलेस वर्ड यूज़ करते हैं तो अनलेस के बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है? पहली चीज़, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, है ना? और जब आप अनलेस यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा, ना कि फ्यूचर वाला, वो आप पहले बोल चुके हो। सो आपका सेंटेंस आई वोंट फॉरगिव यू अनलेस यू डिसरिस्पेक्ट, और नहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं, आपका ये बनेगा अनलेस यू रिस्पेक्ट योर एल्डर वंस, और वंस की यहाँ स्पेलिंग का चेक करना, ONES हो जाएगा। ये जो ONCE होता है वंस, ये एक दफा के लिए यूज करते हैं ना, जब हम किसी फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस, उस सिचुएशन में हम ONCE यूज करते हैं, फाइन। सो आपका जो सेंटेंस है वो होना चाहिए आई वॉन्ट फॉरगिव यू अनलेस यू रिस्पेक्ट योर एल्डर वंस, सो ये एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस अनलेस यू स्नोर, जब तक आप नहीं 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 नहीं, जब तक आप, आपका मतलब समझ रहे हैं, वो जब तक नहीं बहुत अच्छी नींद लेंगे जब तक आप खराटे नहीं मारोगे, मतलब आप जब खराटे मारोगे तो उनको अच्छी नींद आएगी, प्रिया मैम, तो आप इसको समझिएगा, ये तो बहुत
अलग हो जाएगा। यानी ऐसा हो भी सकता है कि किसी की खर्राटे इतने मेलोडियस हों कि उनको सुन के ही दूसरों का नींद आए। फाइन, सो आप इसको समझिएगा, आप इसको खर्राटे ना करके दूसरा एक तरीका हो, मैंने और भी बहुत सारी वोकैबुलरी दे रखी है, आप उसको यूज कर सकते हो वहाँ पे। ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस ही टेक्स स्लीपिंग पिल्स। वेरी नाइस सेंटेंस, बस टेक में एस लगाना है सिमी मैम, कि he can't have a sound sleep unless he takes sleeping pills. I won't forgive you unless you really feel नहीं, यहाँ आप admit यूज कर रहे हो या realize यूज कर लो, यहाँ पे वर्ड है ना याशी मैम, unless you really realize your mistake. He can't have a sound sleep unless he doesn't, unless के बाद doesn't नहीं आएगा। यही मैं इसलिए आज मैंने unless को प्रैक्टिस, इट हैपेंस, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, दैट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो अनलेस की आप लोगों ने काफी दिन से प्रैक्टिस की नहीं है, दैट इज व्हाई वी आई चोज टुडे कि आज नए वर्ड्स के ऊपर काम नहीं करते, आज हम बात करते हैं जो हम सीख चुके हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। सो दिव्यांशी मैम, आपको क्या करना है, डजंट हटाना है वहां से। सो आई ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस he does his work. He can't have a sound sleep unless he takes a bath. Very good sentence. Sometimes हो सकता है कुछ लोगों को जब तक अच्छी नींद नहीं आती, जब तक वो नहा नहीं लेते। He can't have a sound sleep unless he listens to music. तो कबीरा मैम लिसन में एस लग जाएगा। He listens to music. He can't have a sound sleep unless he takes a bath. Yeah. He can't have a sound sleep unless his mom sings हो जाएगा, है ना। और मैंने एक और वर्ड दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड क्रून, CROON, क्रून। तो अगर कोई छोटा बच्चा है तो हम बिल्कुल बात कर सकते हैं कि भैया ये बच्चा जब तक नहीं सोता जब तक कि इसकी मम्मी इसके लिए नहीं सुनाती। तो ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस ही वर्क्स आउट। वेरी गुड सेंटेंस, बिल्कुल सही है। जब आप जिम में बात कर लें तो यस, या जब तक वो थक नहीं जाता, जब तक वो उसको अच्छी नींद नहीं आती, कई बार ये भी हो सकता है। देयर आर सम पीपल एंड वन ऑफ देम इज मी एक्चुअली। जब तक मैं बहुत मेहनत नहीं करता, इट आई हैव रियली रियलाइज्ड अ लॉट व्हेन आई एम नॉट वर्किंग वेरी हार्ड, सो मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आती। सो ही कांट हैव अ साउंड स्लीप unless he does complete his work. He can't have sound sleep unless fan cooler starts. This is also good. He can't have sound sleep unless he has milk. Very nice. ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को दूध पीने के बाद ही अच्छी नींद आती हो। He can't have a sound sleep unless he takes milk. Very nice. So, अच्छा, आप अपने बारे में रियल लाइफ बताइए कि आपको कब तक नींद नहीं आती, मतलब जब आप जैसे मैंने कहा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे बताऊं तो आई कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस इट्स कंप्लीटली डार्क इन माय रूम। तो जब तक मुझे पूरा अंधेरा नहीं हो जाता मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आती कभी भी। सो अंधेरा होना बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट स्लीप लाइट्स ऑन यूजुअली। सो आई कैन यूज लाइक दिस। सो बाकी आप सब लोग भी यूज कर सकते हैं। एनीवेज, सो देयर यू गो, द थर्ड सेंटेंस। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और अनलेस जैसे पास्ट में यूज हो सकता है, प्रेजेंट में भी यूज हो सकता है, और पास्ट में भी यूज होगा। तो आई डिडंट से एनीथिंग का तो मतलब आप समझ गए कि मैंने कुछ नहीं कहा था। बट इफ आई यूज दिस सेंटेंस, आई डिडंट से एनीथिंग अनलेस, तो इसका मतलब समझिए, यानी कि मैंने एक सिचुएशन आने तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब वो सिचुएशन आई तो इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ बोल दिया है। मैंने कुछ नहीं कहा था जब तक कि, आपको कंप्लीट करना सेंटेंस, ही कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस ही रिवाइज्ड, रिवाइजेस हो जाएगा, है ना। याशी मैम आपके सेंटेंस में रिवाइजेस हो जाएगा, रिवाइजेस एवरीथिंग इन अ डे। आई कांट हैव अ साउंड स्लीप अनलेस कंप्लीट डार्कनेस इन माय, सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा आपको कि इट्स कंप्लीटली डार्क, या देयर इज कंप्लीट डार्कनेस इन माय रूम। I can't have a sound sleep unless I wash my face. That's a very nice sentence. So there are some people जिनको ऐसे मुंह धोने के बाद नींद नहीं आती sometimes. So you can
I didn't say anything unless he abused. Very nice. Good sentence. I didn't say anything unless he provoked me. Very good. और भी तो कर सकते हैं. I didn't say anything unless he started abusing her. Very good. Nice. लेकिन आप उसी में क्यों कह रहे हैं? आप ये भी कह सकते हैं ना किसी पॉजिटिव से में मैंने कुछ नहीं कहा था जब तक कि he tempted me. He didn't say anything unless she misbehaved. Very nice. So he didn't say anything unless she misbehaved. बिल्कुल बात कर सकते हैं. सो बस ध्यान रखना है अनलेस के बाद नॉट नेगेटिव सेंटेंस हम यूज नहीं कर रहे हैं. आई डिडंट से एनीथिंग अनलेस ही स्पोक अगेंस्ट मी. Good sentence. Waiting for some more people to make some more, beautiful sentences. You guys are doing really well. Quite happy. So, Simi ma'am sentence. I didn't say anything unless she mum, uh, dang, unless she क्या क्या बोलना चाहते हैं सिमी मैम. मम तो चुप होने के लिए होता है, बट मम इज नॉट एक्शन. सो पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहोगे आई डिडंट से एनीथिंग अनलेस शी कैप्ट मम. जब तक कि वो चुप नहीं हो गया, आपने कुछ नहीं कहा. आई डिडंट से एनीथिंग अनलेस तो कीप बन जाएगा वहां पे. अनलेस शी कैप्ट मम. आई डिडंट से एनीथिंग. आई डिडंट से अनलेस ही स्टार्टेड लॉकिंग हो जाएगा फिर. वेरी नाइस सेंटेंस. बट स्टार्ट एक्शन के साथ हम लोग के दो रूल होते हैं. या तो स्टार्ट प्लस टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या फिर स्टार्ट प्लस एक्शन आईएनजी का रूल. सो आई डिडंट से एनीथिंग अनलेस ही स्टार्टेड. पास्ट की बात है तो स्टार्ट्स भी नहीं लग सकता. अनलेस ही स्टार्टेड लॉकिंग हॉर्न्स विद मी. I didn't say anything unless she scolds me. No, this is wrong. अब समझो आप. पास्ट का सेंटेंस चल रहा है. I didn't say anything unless water overflowed. जब तक पानी की ओवरफ्लो नहीं हो गया. वेरी गुड. नाइस. I didn't say anything unless she started to criticize me. अच्छा, क्रिटिसाइज के लिए मैंने 2 दिन पहले जस्ट डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट्स वीडियो में एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज किया था जिसमें हम आप किसी को जब क्रिटिसाइज करते हैं और एक इंसल्टिंग वे से करते हैं तो देयर इज ब्यूटीफुल वर्ड. प्रिया मैम, आई जस्ट वांट टू नो कि आपने वो यूज किया नहीं किया. ये आप लोगों को याद है वो नहीं याद है. डे बिफोर यस्टरडे ओनली. एक शॉर्ट्स वर्ड है. आर से वर्ड शुरू होता है. आर लेटर से वर्ड शुरू होगा. I didn't say anything unless she cheated me. Good. So yeah, thank you so much, Simi ma'am. This is revival. So you can use this word, है ना. तो आपके पास और बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं. So criticize एक वर्ड हो गया. इसके अलावा आपको मैंने बताया कि you can use this word. So revival word is there. You use this word because ये criticize से ज़्यादा strong word है. So this is the one. Okay, the fourth example. Actually, let me give you the fourth one, and it's third for third person. And इसकी practice करने वाले हैं अब हम लोग. My mom doesn't. Sorry, my mom doesn't. एक वर्ड आपको मैंने बताया था किसी को डांटने के लिए या बहुत सीवियरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रूप से किसी को जब डांटना हो तो आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड चाइड. इसको प्लीज चाहिए मत पढ़िएगा बिकॉज सम पीपल सेड चाहिए. सो चाहिए नहीं है. इट्स नॉट. इट्स चाइड. CHIDE. सो माय mom doesn't chide me unless, there you go. My mom doesn't chide me unless, now you have to complete the sentence. सोचिए आपकी मम्मी आपको बहुत बुरा कब डांटती है, वो सिचुएशन आपको बतानी है. So my mom doesn't chide me unless,
सो मी लगा है ना, तो आप किसी थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस मत बनाइएगा. सो माई मॉम डजंट चाइड मी अनलेस, my mom doesn't chide me unless I make a big mistake. आप फिर ब्लंडर वर्ड यूज कर सकते हो, आप बिग मिस्टेक वर्ड को हटा दो, है ना मोहित सर. सो माई मॉम डजंट चाइड मी अनलेस आई मेक अ ब्लंडर. My mom doesn't chide me unless I make a mistake. I didn't say anything unless he told about my brother. I he told क्यों होगा? My mom doesn't chide me unless I my mom doesn't chide me unless I annoy her. Annoy में तो mom doesn't. Chide means Rashmi ma'am, it's a very strong word to scold someone severely. बहुत सीवियरली किसी को डांटना. और आई थिंक अनॉय में तो मैं शायद उतना नहीं डांटूंगा. My mom doesn't chide me unless I skip a meal. Okay, she takes care of your meal, and if you miss it, she would. My mom doesn't chide me unless I break something. Okay, so you break and she chides. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मली जब चाइड करते हैं नॉर्मली तो मिसबिहेव के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है जब आपकी मैनर्स सही नहीं होते, तो उस केसेस में चाइल्ड वर्ड को ज़्यादातर यूज करते हैं. फाइन. सो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे माई मॉम डजंट चाइल्ड मी अनलेस आई डू माई होमवर्क. ठीक है. Doesn't chide me unless I do my homework. That's good. So there's the word chide. My mom doesn't chide me unless I get into mischief. Yeah, this is right. Bilkul. You can use this way and some other ways also. So my mom doesn't chide me unless I don't. Sudhir sir. अनलेस के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करना. आप हिंदी सोचेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, आप हिंदी से बनाएंगे तो गलत होगा. हिंदी ना देख के आप अनलेस का रूल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनलेस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं यूज करते. और आपको पहला बनाना पड़ेगा माय मॉम डजंट चाइड मी अनलेस. सो माय मॉम डजंट चाइड मी अनलेस आई मिसबिहेव विद एल्डर्स. Yes, actually I chide Ashmi when she annoys me. I got you, you know. So you shouldn't. Next time you should wait unless she, makes you angry or she infuriates you. When she annoys you, I think you shouldn't chide her. You can just only warn her. You can warn her, don't make me angry. So this way you can scold her. But when you chide means if she infuriates you, then you can chide. So there you go. एनीवेज, अब अनलेस के दूसरे वाले सेंटेंस. अभी तक जो मैंने 4 सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवाए, उसका एक रूल होता है कि जिसमें अनलेस को आपने सेंटेंस दोनों सेंटेंस के बीच में यूज किया था. एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो आपको वही रूल भी याद होगा कि अनलेस को दूसरा यूज करने का तरीका होता है, इसमें यूज टू लगा है तो पास्ट हो जाएगा, है ना. जब हम पास्ट की बात करेंगे तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा क्या, सॉरी आई वाज यूजिंग अनलेस, कि आप सेंटेंस के शुरू में भी अनलेस यूज कर सकते हैं. सो अनलेस, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करिए एंड देन पुट अ कॉमा और उसके बाद सेकंड सेंटेंस यूज करिएगा. जैसे इफ आई एम यूजिंग राइट नाउ, सो अनलेस यू हेल्प मी, फाइन, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. और अब याद रखना, अब जो दूसरा सेंटेंस होना चाहिए वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अभी पॉजिटिव सेंटेंस तो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया. अनलेस यू हेल्प मी, यानी कि जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे तब तक आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस. अब सो अनलेस यू हेल्प मी
सो आप में से जो लोग, इफ़ यू आर लाइक रश्मि मैम इज़ मदर, और उनकी बेटी अगर ये कहें अनलेस यू हेल्प मी मॉम, सो क्या है उस समय पे देखो आप, सो अनलेस यू हेल्प मी, और इसको लेकर आप फ्यूचर का सेंटेंस बनाना। आई डोंट टॉक टू यू अनलेस यू हेल्प मी, आई डोंट टॉक टू यू, मतलब जब तक आप मेरी मदद नहीं करते मैं आपसे बात नहीं करती, इसका ये मतलब हुआ। और अगर आप इसको फ्यूचर में लेके चलना चाहते हो कि अगर, मतलब जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे तब तक मैं आपसे बात नहीं करूंगी सिमी मैम, तो आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में चला जाएगा। अनलेस यू हेल्प मी इन माई होमवर्क, आई वॉन्ट मेक फूड, यस दैट्स गुड। Unless you help me, I won't be able to complete this project. Very nice sentence. Yes, that is very nice. Unless you help me. और मैंने एक रूल और बताया था आप सब लोगों को, आई होप यू रिमेंबर दैट। जब हम कभी किसी इंसान की किसी काम को करने में मदद करते हैं, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है यूज़ करने का हेल्प को, तो उस इंसान के हेल्प के साथ पर्सन का नाम और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दैट्स इट। सो अगर मैं कहूँ कि अनलेस यू हेल्प मी डू माई होमवर्क, ठीक है, मैंने डू फर्स्ट फॉर्म लगाई, इसमें इन और कुछ नहीं यूज किया। सो अनलेस यू हेल्प मी डू माई होमवर्क, आई वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट। अनलेस यू हेल्प मी, आई वॉन्ट बी एबल हो जाएगा, दिव्यांशी मैम, तो इसमें बी लगेगा, आई वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। Unless you make my diagrams, I won't talk with you. Good. This is nice. It's good. और किसी को अगर ये, फिर आप ये भी कह सकते हो unless you take medicine, जब तक आप दवाई नहीं खाओगे, unless you take medicine. So unless you take medicine, unless you help me, I won't be able to complete this project work. Unless you help me in my assignment, I won't be completed properly. इसमें बी नहीं आएगा, याशी मैम, बी नहीं आएगा इसमें। इसमें कंप्लीट इज फर्स्ट फॉर्म, और जो इससे पहले जो सेंटेंस बने जिसमें बी एबल लगा, एबल इज नॉट एन एक्शन, इसलिए हम लोगों को बी यूज करना पड़ रहा है। अनलेस यू हेल्प मी, आई वॉन्ट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, एबल टू लर्न इंग्लिश, मोहित सर। Unless you teach me English, I won't be able to speak English. Yes, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। So, unless you take medicine, unless you take medicine, I will not go anywhere. Very good sentence. जब तक आप दवाई नहीं खाओगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। Good sentence. मुझे लगा था आप जब तक unless you take medicine, your kidney stones won't remove. Good. Hmm. Good, good. You guys are trying really very nice. I'm quite happy with today's efforts actually. So unless you take medicines, your kidney stones won't remove. And more, unless you take vegetables, you will be healthy. You won't be healthy. Will be healthy नहीं, you won't be healthy. तो जब तक आप नहीं खाओगे ग्रीन वेजिटेबल्स, आप हेल्दी नहीं बनोगे। Unless you take medicine, I will not give you mobile. Yes, sometimes ये मॉम्स का डायलॉग हो सकता है बच्चों के लिए, जो बार बार कहते हैं मम्मी मोबाइल। सो ये कह सकते हैं कि जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, जब तक आप खाना फिनिश नहीं करोगे आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अनलेस यू टेक मेडिसिन, आई वोंट गिव यू स्वीट्स। ओके, तो फिर स्वीट्स खिला दोगे आप दवाई के टाइम पे। ओके, द लास्ट वन, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अनलेस, अनलेस पापा गिव्स मी मनी। चलो इसमें देखते हैं आप लोग क्या बनाओगे सेंटेंस। अनलेस पापा गिव्स मी मनी, वेटिंग फॉर योर सम विटी आंसर्स आप लोगों के अच्छे।
दिमाग वाले थॉटफुल आंसर्स को वेट कर रहा हूँ। अनलेस पापा गिव्स मी मनी, मतलब जब तक पापा मुझे पैसे नहीं देंगे। अनलेस यू टेक मेडिसिन यू वोंट गेट वेल, प्रैक्टिकल थिंग। अनलेस यू डोंट टेक, अनलेस के साथ फिर डोंट लगा दिया आपने दिव्यांशी मैम। यहाँ पे आपको अपने थोड़ा सा तैयार रखना है कि अनलेस के बाद नहीं नहीं नेगेटिव नहीं लगाना है। सो अनलेस यू टेक अनलेस यू टेक डिनर आई वोंट गिव यू डिजर्ट। तो जब तक तुम डिनर नहीं करोगे आपको आपको डिजर्ट नहीं मिलेगा। सो इसमें डोंट नहीं होगा। फाइन, सो देयर यू गो। सो द लास्ट वन, अनलेस पापा गिव्स मी मनी। तो इसका मतलब आप ये सेंटेंस पापा से नहीं बोल रहे हो, अपने फैमिली मेंबर के, किस फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, किसी से भी, बट यू आर नॉट टॉकिंग टू योर फादर। अनलेस पापा गिव्स मी मनी आई वोंट बी एबल टू बाय बुक्स। गुड सेंटेंस। जब तक पापा पैसे नहीं देंगे जब तक मैं किताब कैसे खरीदूंगी, नहीं खरीद पाएंगे ना। सो आई वोंट बी एबल टू बाय बुक्स। अनलेस पापा गिव्स मी मनी आई डोंट टेक डिनर। ये हो गया देखा। हम्म। सो पापा जब तक पैसे नहीं देते आपको, आप डिनर नहीं करते या नहीं करोगे। दो चीजें हैं। आपका सेंटेंस भी सही है बट ये अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि जब तक मुझे पापा पैसे नहीं देते मैं डिनर नहीं करता। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि जब तक पापा पैसे नहीं देंगे तो मैं डिनर नहीं करूंगा, तो ये विल नॉट बनेगा, ना कि डोंट। अनलेस पापा गिव्स मी मनी आई वॉन्ट पे स्कूल फीस। सही है। अनलेस पापा गिव्स मी मनी आई वॉन्ट लिसन टू हिम। जब तक पापा पैसे नहीं देंगे हम नहीं सुनेंगे पापा की हड़ताल। Unless Papa gives me money, I will cry and won't take anything. I will cry नहीं होगा, बस ये कि I won't take anything। ठीक है, यशी मैम। प्रिया मैम। It's okay, no problem, it happens। So unless Papa gives me money I won't be able to get my bike serviced। Unless Papa gives me money I won't buy a new dress for my birthday। Okay, so why do you need to buy a new dress? Unless Papa gives me money, I won't talk to anyone. Yes. Hunger strike. I'm on hunger strike. I won't take anything. I won't talk to anyone. Good. Unless Papa gives me money, I won't buy chocolate। जब तक पापा पैसे नहीं देंगे आप चॉकलेट नहीं खरीदोगे। ठीक है, पापा पैसे देंगे आप चॉकलेट खरीद लोगे। अगर दोस्तों के अंदर पिकनिक जाने का प्लान चल रहा है और आपने कहा कि जब तक पापा पैसे नहीं देंगे मैं नहीं आ सकती या नहीं आ पाऊंगा, है ना, तो भविष्य की बात हो गई। जब तक पापा पैसे नहीं देंगे तो पापा पैसे देंगे तो हम चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब अनलेस पापा गिव्स मी मनी आई विल टेल हिम अगेन एंड अगेन। जब तक पापा पैसे नहीं देंगे आप उन्हें बार बार बोलेंगे। So, oh, this is it's over 10:30, 3 minutes more. It was nice session. I enjoyed and I hope you also. Thank you so much for being present in today's session. Hope to see you tomorrow. Can't promise. That's all for today. Thank you so much. Have a nice dream or have a sound slumber. Bring unless Papa brings chocolate for me, I won't talk with him. Hmm. That was such an interesting and entertaining session. Thank you, sir. Most welcome, Rohan sir, Papa. If Papa don't give me money, I will use his debit card. It's good. Thank you so much. Most welcome, Simi ma'am. Have a sound slumber, guys. Good night, everyone. Time to say ciao.
Bye bye. Most welcome, Ashwin ma'am. Have a good night.